Hope so I'm visible and audible right now. Okay, so welcome to Unacademy Law. बच्चों, so today we will discuss on mixed questions of polity. So are you ready, anyone? Anyone? Come on. सभी को लग रहा होगा कि आज मैं इतना जल्दी कैसे करी है ना सुबह सुबह. तो मुझे लगा कि सुबह सुबह कर लेते हैं हम लोग, है ना. सुबह सुबह क्लास स्टार्ट कर लेते हैं. सुबह से ही क्लास रहेगा तो अच्छा रहेगा. So I hope कि no one is live, right? No one is live. चलिए कोई बात, वेट कर लेते हैं हम लोग. सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ बच्चों. आप देख सकते हो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है फॉर 2023 एंड 24 एस्पिरेंट्स. ये दोनों मॉक टेस्ट हो रहे हैं बच्चों. इट मीन्स कि क्लैट के लिए और एलएट के लिए भी. क्लैट तो हो चुका है और होप सो आपको आपने आप क्लैट दिए होंगे और एलएट के लिए देना है आपको, राइट. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये 29 को है 11 AM पे नो योर ऑल इंडिया rank and SSC or preparation level question based on the latest pattern latest exam pattern, right. ये रैंक 1 रैंक 2 कुछ सभी को स्कॉलरशिप मिलता है बच्चों. आप बिल्कुल यूज कर सकते हो मेरा रेफरल कोड. इट्स PLI. ठीक है. Hello Chandan, good morning. Unacademy present you a new YouTube channel, Unacademy Legal World, one-stop solution for your class journey. Unacademy learner who made it to the top and you, these are the Unacademy learner. आगे next time आपकी बारी है, right? Unacademy CLAT Iconic program, it is different from plus में आपको मिलते हैं. अगर आप बेसिक प्लान से स्टार्ट करना चाहते हो तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, डे लाइफ क्लास मिलते हैं, लाइफ टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलते हैं. हेलो अनिश. आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है बच्चों? 1-12 लाइव मेंटरशिप, लाइव डॉट सॉल्विंग रिजल्ट प्रायोरिटी में क्लासेस. ये एक्स्ट्रा है बच्चों, ये तो मिलती है. इसके अलावा आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन प्लान, यूज द रेफरल कोड ऑफ माइन दैट इज PLI. आप इसे यूज कर सकते हो PLI को, ताकि आपको सब्सक्रिप्शन ले सको. ओके. Unacademy ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है बच्चों 28 अक्टूबर को इंग्लिश में. एंड दीज आर द एजुकेटर हु आर गोइंग टू गाइड यू. लर्न लीगल भी स्टार्ट हो चुका है 12 अक्टूबर 2022 से. एंड लर्न जीके एंड करंट अफेयर्स भी स्टार्ट हो चुका है 13 अक्टूबर से. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, 500 क्वेश्चन बूस्टर सीरीज चल रहा है. होप सो आपने अटेंड करी होगी. स्टार्ट विद बेसिक ऑफ लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट 2024 by these educator and join your dream and a new college with Unacademy CLAT. Talk to Unacademy counselor for further assistance. Call us on 8585 Monday to Friday. बच्चों स्टार्ट करा जाए एनीवन. जल्दी से बताओ, स्टार्ट करूं? सभी रेडी हैं? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. हेलो योगेंद्र, हेलो केशव, गुड मॉर्निंग. बच्चों क्वेश्चन आपके सामने विजिबल होगा, राइट. एक सेकेंड, जस्ट वेट. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बीच से स्टार्ट हो गई थी, राइट. मैं सोचू कि क्वेश्चन नंबर 26 कैसे स्टार्ट हो गई. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन सभी को विजिबल होगा बच्चों. क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमा बाई केस ऑफ 1884. सभी ने पढ़ा होगा लीगल में, राइट. तो आप मुझे बताओ which one is the correct answer about this case. Women's right to gain education, ये केस किससे रिलेटेड है? एज ऑफ कंसेंट से और restitution of conjugal rights. Which one is the correct answer by mistake? Sorry Keshav. Okay. In the context of Indian history, the Rakhma Bai case of 1884 is revolved around women's right to gain education, age of consent, restitution of conjugal rights. Which one is the correct answer? Keshav, Yogendra, Anish, Chandan, anyone? By mistake? No. This is not by mistake. आज दो YouTube सेशन है मेरी. एक 10 AM पे, ठीक है. और दूसरी जो है बच्चों वो है 9 नहीं, it's 6:15 पे, राइट. 6:15 पे है. दो है आज YouTube सेशन. Okay, Keshav is saying B at it means 2 and 3, that is age of consent, restitution of conjugal rights. And Anish Ansari is C, saying C, right? The correct answer is D. No one is correct. Ma'am check. Okay, no one is correct है ना बच्चों. D is the correct answer. Hope so आपको visible होगा. Okay.
क्या आपको क्वेश्चन विजिबल दिख रहा है? क्वेश्चन विजिबल दिख रहा है? रुकमाबाई वॉज मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज ऑफ 11 ईयर्स, ठीक है। उनकी शादी हो गई थी बच्चों 11 ईयर्स में। एंड आप देख सकते हो, हेंस बाय 1880 she filed a court case against her husband who demanded to marry life with her and have physical relation with him. So आपको ये भी पता होना चाहिए, she wanted to further study further and also wanted to the marriage age should be increased, leading to the formation of Rukma by Defense Committee supported by social reformer like Bairamji Malabari, finally leading to the Age of Consent Bill 1891, which increased the minimum age of marriage, and she also became a doctor after resuming her studies. So सारे points correct है बच्चों, hope so कि आपको पता होगा, है ना? होप सो कि आपको पता होगा, राइट? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको विजिबल है बच्चों? एनीवन? क्या आपको विजिबल है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, एनीवन? इस क्वेश्चन का आंसर करिए बच्चों। Which one is the correct answer बच्चों? Okay, so Chief Justice of a High Court is appointed by the governor. Is appointed by the governor. Hello Rishabh, hello Sudeep Mandal. ओके, सो ध्यान से देखना, क्या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस होल्ड्स ऑफिस अंटिल he or she attains the age of 65. So which one is the correct answer? Sudeep, Rishabh, Keshav, Anish, which one is the correct answer बच्चों? Okay, Sudeep is saying C. Rishabh, Keshav, Anish, which one is the correct answer बच्चों? आपको बताना है कि जो चीफ जस्टिस है, क्या वो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, क्या वो उन्हें अपॉइंट गवर्नर करते हैं, और हर एक जज जो हाई कोर्ट से रिलेटेड होते हैं इंक्लूड द चीफ जस्टिस होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 65 years. Okay, so no one is giving the correct answer, so the correct answer is D बच्चों। D it means क्या है? D मतलब neither one nor two, ठीक है, ध्यान से देखना, it's neither one nor two। अब देखो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट concern article 217. So every judge of a high court including the chief justice holds office until he or she attain the age of 62 years, right? So Deep, Rishabh, Keshav, Anish. Okay, so मुझे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने विजिबल होगा। सैलरी एंड अलाउंसेस जो होती है स्पीकर की, लोकसभा की, वो क्या जो चार्ज होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। और इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस द स्पीकर ऑफ लोकसभा रैंक्स हायर देन ऑल द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अदर देन प्राइम मिनिस्टर। व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? हेलो आर्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आर्या। Okay. Okay. Let's check बच्चों। A is the correct answer? No बच्चों, C is the correct answer। दोनों ही पॉइंट सही हैं, ठीक है। आपको बताना चाहिए कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फिक्स द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द आर्टिकल 97 में मेंशन है, एंड द सैलरीज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
राइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो आप मुझे बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 5 year tenure for panchayat, a reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes for panchayat membership, indirect election for all panchayat seats, village and intermediate level, or reservation for not less than 1/3 of the seats for women. So part 9 में कौन से features नहीं हैं? Anyone? Come on. C. C. Okay, someone is saying C. चलिए मैं आपको बताती हूँ. So the correct answer is C. Very good. First answer है जो सही आ रहा है. Indirect election for all panchayat seats, village and intermediate level is not the feature of the Part 9 of the Constitution of India, right? चलिए next question की तरफ. So आप ध्यान से पढ़ना बच्चों ये question. A bill pending in the legislature of a state shall not lapse by reason of the prorogation of the house or house thereof. So, a bill pending in the Legislative Council of the state which has not been passed by the Legislative Assembly shall not lapse on dissolution of the Assembly. So, which of the statement given above is or are correct? Only one, only two, both one and two, and neither one or two. स्कूल रिकॉर्ड्स में अगर कुछ अलग है राधिका तो 10th सर्टिफिकेट से आपके स्कूल रिकॉर्ड से क्या मतलब है? आपके तो जो सर्टिफिकेट चेक होंगे वो 10th सर्टिफिकेट ही चेक होगा ना, 10th में 12th में. हेलो सांची. Okay, so which one is the correct answer? No one is giving the correct answer, बच्चों. So correct answer is C. It means both one or two तो correct है. So ध्यान से देखना, both the given statement are correct. Therefore answer is option C. So the entry of public health sanitation is included in the Constitution of India in union list, state list, concurrent list, or none of the above. Which one is the correct answer? Tanupriya, Sachi, Keshav. Which one is the correct answer, बच्चों? Come on. Stateless, sure. Check that. So correct answer is stateless. The entry public health and sanitation is included in the state bill of the Constitution of India. The correct answer is B, बच्चों. So next question. On which of the following grounds can a judge of the Supreme Court or a High Court be imprisoned of violation of the Constitution, proof misbehavior, incapacity? Which of the following are the correct one about a judge of the Supreme Court impeached or a judge of a High Court can be impeached? Which one is the correct answer? Tanupriya, Sachi, Keshav, Sudeep, Anis, anyone? Come on, बच्चों, जल्दी से बता दो. No one. No one, बच्चों. C. So the correct answer is D. So बच्चों D it means 2 and 3 जो है ना वो correct है. ठीक है. Violation of Constitution Supreme Court of जज से रिलेटेड नहीं है, वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है. शायद आप भूल गए हो. Judge of the Supreme Court of or a High Court can be impeached on the basis of proved misbehavior and incapacity. Right. So one more important thing, Rule of Law Index is released by which of the following? Amnesty International, International Court of Justice, Office of the UN Commissioner for Human Rights, World Justice Project. Which one is the correct answer? Sakshi. So आप डी किसका आंसर कर रहे हो इसका? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इट्स एमनेस्टी इंटरनेशनल,
International Court of Justice, or Office of UN Commissioner for Human Rights? Sure, sure, sure. Okay, let's try. Very good. It's D. That is, it is released by World Justice Project. Very good. Very good. So next question. ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो क्वेश्चन देख के डरना मत. As per the Right to Education RTE Act, to be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of teacher education. First point. And as per the RTE Act, for teacher primary classes, a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education guidelines. So in India, more than 90% of the teacher education institutions are directly under the state government. So which one is the correct answer? जल्दी से बताओ बच्चों. A. A is the correct one. Tanupriya is saying A. 8 का C. Okay, good. 8 का C तो सुदीप मंडल का आंसर. क्या बात है. थैंक यू ऐसे बताने के लिए. वरना मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो जा रही है ना. मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो जा रही थी, है ना बच्चों. Okay, so the correct answer is it's P, and no one is giving the no one has given the correct answer. So 40 under RT Act Section 23, National Council for Teacher Education (NCTE) decided the minimum qualification. So one is wrong. And after RT, it is mandatory that only those people may be appointed as a teacher who are able to clear TET. So 2 is correct, and thus by elimination we get the correct answer B, only 2. Right. Good morning, Satyam. So a British citizen staying in India cannot claim the right to freedom of trade and profession, equality before the law, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सो बच्चों, आपको मैंने कल ही बताया है. सिटीजनशिप कल ही पढ़ा रही थी मैं, और आई थिंक आपको याद होगा बच्चों, मेरी स्टैटिक की भी क्लास चल रही है और करंट अफेयर्स की भी प्लस पे क्लास चल रही है. आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, है ना. क्लियर है बच्चों. Okay. Freedom of trade and profession. Okay. Tanupriya. So the correct answer is it's A. That is freedom of trade and profession. A British citizen staying in India cannot claim the right, okay, to freedom of trade and profession. So no, Satyam, you are wrong, right? So question number 11. Supreme Court of India tenders advice to the President of India on matters of law or fact on its own initiative. So on any matter of larger public interest, if he seeks such an advice only if the matter relate to the fundamental rights of the citizen. So which one is the correct answer? That is 1 only, 2 only, or 3 only, or 1 and 2. Sakshi is saying A. Okay. Anyone? Anyone? Come on, come on. Come on, बच्चों. D. Okay. So D. Tanupriya Keshav Sakshi is saying B. D. पता नहीं confusion है सभी को. सो बच्चों, जिसने बी बोला है, जैसे साची ने बी बोला है, तनुप्रिया ने बी बोला है, केशव ने बी बोला है, सो द करेक्ट आंसर इज बी. इट मींस बच्चों 2 ओनली. इफ यू सीक सच एन एडवाइस, राइट, इट मींस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
Highest criminal court of the district is the Court of District and Session Judge. The district judge are appointed by the governor in consultation with the High Court, or a person to be eligible for appointment as a district judge should be an advocate or a pleader of 7 years standing or more, or an officer in judicial service of the union or the state. So when the session judge award a death sentence, it must be confirmed by the High Court before it is carried out. देखो मैंने सभी को बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी पढ़ाया है ना. आई थिंक जो प्लस मेंबर है उन्हें पता होगा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी पढ़ा है, मैंने हाई कोर्ट भी पढ़ा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ा है. तो ये आंसर आप लोगों को पता होगा, और जिसने नहीं देखा है मेरी प्लस क्लास में शेड्यूल होगा, होप सो आपको विजिबल होगा, आप चेक कर लेना. ओके ये पढ़ाया ना, थैंक गॉड आप लोगों को याद है. ओ माय गॉड. सो आंसर भी दे दो. Which one is the correct one? Keshav, Sachi, Sudeep, Tanupriya, Sakshi, Satyam, anyone, Arya? Okay, so the correct answer is D, bachcho. These provisions are given under Article 233, 235 in the chapter of subordinate code in the Constitution of India. तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे पॉइंट करेक्ट हैं. हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट का जो होता है वो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है और सेक्शन जज होते हैं. So the district judge are appointed by the governor in consultation with the High Court, and the person is to be the eligible for appointment as a district judge should be an advocate or a pleader of 7 years standing or more, or an officer in judicial service of the union or the state. Right. So one more important thing, when the session judge awards a obviously death sentence, so ये confirm किया जाता है बच्चों हाई कोर्ट के द्वारा जब उससे प्रोसेस करने से पहले. ठीक है. So question number 13 बच्चों, under the Government of India Act 1919, the Indian legislature was made more representative and for the first time bicameral. And the Government of India Act 1935 prescribed a federation taking the province and the Indian state as a unit. So which one is the correct answer, bachcho? Only one, only two. Okay, both A and 1 and 2, and neither 1 nor 2. And K triple zero one is saying B. Okay. Anyone, बच्चों? So Sachi is saying B, and चलिए मैं आपको आंसर, माय नेम इज हेलो कुमकुम. सो कुमकुम आप मुझे बताओ. ओके सभी बी कह रहे हैं, चलो चेक करते हैं. सो बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर. सी इट मीन्स दोनों ही पॉइंट सही हैं. ध्यान से देखना बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 was passed to expand participation of Indian in the government of India. It introduced for the first time bicameralism and direct election of the country. Government of India Act 1935 is an act to make further provision for the government of India. This federation was to consist of British India and the princely state. Okay. So those who want to take subscription use the referral code of mine, that is PLI, right? चलिए. So आपको बताना है which of the following is not the principal feature of the Government of India Act 1919 बच्चों. मत बताना मुझे कौन सा प्रिंसिपल नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का. So, introduce of in the executive government of the province, introduction of separate communal electorates for Muslim, or devolution of legislative authority by the center to the province, or expansion and reconstitution of central and provincial legislature. Which one is the correct answer? Which one? Which one? Arya, Sakshi, Kumkum, Sachi.
No one. Sachi is saying A or B. Rohan is saying A. Let's start. So B is the correct answer. ध्यान से देखना, A और B में confusion था. B is the answer. Hello Atif. So ध्यान से देखो बच्चों, Government of India Act 1919 gave the province more legislative power, provided for the framing of rules for the devolution of authority between the center and the provinces. The hierarchy system of double government introduced by the Government of India Act 1990 for the province of British India. It marked the first introduction of the democratic principle into the executive branch of the British administration of India. So, the Indian Council Act of 1909 or the Morley Minto reform introduced a system of communal representation for Muslim by accepting the concept of separate electorate. Right? चलिए, so next one. So, आप मुझे बताएंगे कौन से प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया का जिसके द्वारा इमीडिएट इफेक्ट मतलब जो इमीडिएट इफेक्ट में आया था 26/1949 में. Citizenship, emergency provision, elections, federal system. Which one is the correct answer? Which of the following provision of the Constitution of India was or were given immediate effect from November 26, 1949? Sakshi, Atif, Rohan, Arya, Kumkum. हाँ, यहाँ पे जितने बच्चे प्रेजेंट है बच्चों, आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है क्योंकि मेरी प्लस क्लासेस होती है और मैंने सारे पढ़ा रखे. चलिए मैं आपको बताती हूँ. ओके, कुमकुम सिंह सी, अनुभव, क्या बात है, अनुभव का पता है मुझे. चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज सी. वेरी गुड कुमकुम. Now the constitution came into force on 26 January 1950. Some provision related to citizenship, elections, provisional parliament, provision relating to the election commission, and provision related to the oath or affirmation by the president. Temporary or transitional provision were given immediate effect on 26 November 1949. Okay. So one more important thing, but डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, मतलब डीपीएसपी के बारे में. ये बच्चों आप मुझे बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी इन इंडिया. सो प्रमोशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, adherence of non-alignment and पंचशील, or maternity benefit amendment act 1961, or formation of NCBC, that is National Commission for Back Classes. So which one is the correct answer बच्चों? Which one? सांची, रोहन, कुमकुम, अनुभव, आतिफ. Come on बच्चों, give me the answer. Give me the answer. जी रखे, सारे पॉइंट सही है. राइट. सिर्फ कुमकुम को पता है क्या बच्चों? आतिफ इज सेइंग डी. रोहन, सांची सेइंग सी. चलो चल करते हैं. सो बच्चों डी इज द करेक्ट आंसर. सारे बच्चे सही है. कुमकुम को सॉरी सांची को छोड़ के. 73rd Amendment Act 1992 has been enacted to provide constitutional status and protection to these Panchayati Raj institutions. It aims to achieve Gandhiji dream of every village being a republic and self-sufficient. So the adherence to policy of non-alignment and Panchsheel will promote international peace and security. So Maternity Benefits Amendment Act 1961 has been made to protect the interest of women workers. So by which article right to education has been considered as the fundamental rights for children between 6 to 14? अच्छा, आप लोगों से ना मेरा एक सवाल है. हेलो प्रार्थना, गुड मॉर्निंग. देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना. मैं क्या बोल रही हूँ कि क्या ऐसा होता है क्या कि सारे बच्चों को सारे आंसर्स पता होते हैं? नहीं ना. ऑब्वियसली कंफ्यूजन हो जाती है.
लेकिन चूंकि उसे रिवाइज करते रहना चाहिए, बस ये बोलना चाहिए। Okay, B, it means Article 21A, by which article right to education has been considered as the fundamental rights for children between 6 to 14 years. 21A. क्या बात? So the correct answer is 21A. Constitution 86th Amendment Act. 86th Amendment Act 2022 inserted Article 21A into the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children between 6 to 14 years of age. And this is the fundamental rights, right? This is the fundamental rights. अच्छा. Which of the following features are present in the Indian Constitution? कौन से feature present है बच्चों Indian Constitution में? Multiple procedure for amendment. States are not empowered to initiate amendment or joint sitting of Parliament to resolve disputes regarding constitutional amendment. So which one is the correct answer? Okay, come on. Which of the following features are present in the Indian Constitution? Okay, C. Okay, let's see. The correct answer is A. It means बच्चों A मतलब कौन से पॉइंट सही है, 1 and 2 मतलब मल्टीपल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट और स्टेट्स आर नॉट empowered to initiate amendment. ठीक है. So joint sitting of parliament to resolve dispute regarding on constitutional amendment is wrong. In the given statement, only 1 and 2 are correct, and so option A is the correct one. चलिए, next question. Who among the following is not a member of the National Development Council? That is NDC के कौन से मेंबर नहीं होते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के कौन से मेंबर नहीं होते हैं? प्राइम मिनिस्टर और मेंबर ऑफ नीति आयोग और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सत्यम, साक्षी, आतिफ, तनुप्रिया, रोहन. सभी ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है ना पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन. We be saying B, that is member of Niti Aayog. See, Shahidanam. Let's see which one is the correct answer. So the correct answer is D, बच्चों, President of India. मैं आपको बता दूं, President of India is not the member of the National Development Council. याद रखिए कि NDC के member नहीं होते हैं president, because the National Development Council is presided over by the Prime Minister of India and include all union minister, chief minister of the state and administrator of the union territory and member of the planning commission. समझ में आ गया बच्चों? करेक्ट आंसर क्या था? जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो मेंबर एनडीसी के नहीं होते हैं. पता नहीं, समझ नहीं आता कि तुम लोगों को ये सारे आंसर्स भी नहीं पता ना. So naval, military or air and air force works is listed in the union list, state list, global list or concurrent list given in the 7th schedule of the constitution. Come on. Which one? Which one, बच्चों? Shahid is saying A. Okay. Kamal is saying A. Chali, let's try. So correct answer is A. Thank God. So naval and military and air force works enlisted in the union list given in the 7th schedule in the Constitution of India. So there are 3 lists: state list, union list, and concurrent list in the 7th schedule of the Indian Constitution. This is the next question. I'm very confused. कुमकुम, अभी आप क्या करो ना, अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हो, अभी ये 2 महीने जो आपके पास है, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक, आप ना न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालो. ठीक है? किस चीज़ की हैबिट डालो बच्चों? न्यूज़पेपर रीडिंग की.
और अगर आप बस आपने अपना टॉपिक अंडरलाइन करके रखो, नोट्स नहीं भी बनाते हो तो चलता है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग करने की आदत डालना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महीने में आपके बहुत अच्छे जो हैबिट है ना वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आप जनवरी के करंट अफेयर से नोट डाउन करते रहना। आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ो फिलहाल के लिए, राइट? So Sakshi is saying A and Kamal is saying A. Okay, so आप मुझे बताओ, as per the Industrial Employment Standing Order or Central Amendment Rules 2018, it rules for fixed term employment are implemented. It becomes easier for the firm's company to lay off workers. No notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workman. ओके, तो कुमकुम आपने कुछ रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी हुई है, आप आरसी प्रैक्टिस कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर रहे हो, या सीआर करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ आइडिया डेवलप्ड हो रहा है, एडिटोरियल पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, बताना जरा। क्या न्यूज़पेपर से कुछ भी फायदे हो रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और क्रिटिकल रीजनिंग में? यस मैम। तो आप अभी नोट्स थोड़ा थोड़ा बनाने की आदत डालो, ज़्यादा नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ आप ये एनालाइज करने की कोशिश करो कि उसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी आपको नोट डाउन करने हैं। मैम अभी क्रैश कोर्स कैसे करें क्लास 2023 के लिए? बच्चों सब्सक्रिप्शन ले लो रेफरल कोड यूज़ करके, पीए लाइव करके। अभी मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है करंट अफेयर्स का, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। और फिर मैथ्स की भी आ रही है मेरी क्रैश कोर्स, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इस दिसंबर के बाद नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर में ही होगा बच्चों। अब सेशन दिसंबर टू दिसंबर ही कर दिया है। सीआर कर रही हूँ मैं, सीआर में इम्प्रूवमेंट है कुमकुम। ओके, सो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करूँ, इसका आंसर बताऊं। सो द करेक्ट आंसर इज सी बच्चों, किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं करा है। सी मतलब क्या होता है? बोथ, मतलब दोनों पॉइंट्स ही सही हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट क्या है, करेक्ट है। एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल 2018, नो वर्कमैन employed on fixed term employment basis shall be entitled to any notice or pay it if this service are terminated by non-renewal of contract. So no notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workman. 2 तो सही था ही और फर्स्ट भी सही है, राइट? मैंने करा और तुमने करा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें। और आपके कोई डाउट्स हैं बच्चों? और कोई डाउट्स हैं आपके? कमल, BWW, सत्यम, एनीवन? आ, देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक साइड कर लो। मतलब जैसे अगर आपको लगता है आपने इतने दिन से न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो 10-12 टॉपिक तो 10 टॉपिक तो 10 चलो नहीं तो 6 टॉपिक तो 6 से 7 टॉपिक तो आप निकालते ही होगे रोज के, कि अच्छा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कुछ दिन ना आप एनालिसिस भी चेक कर सकते हो, कुछ दिन आप एनालिसिस भी चेक कर सकते हो कि वो कैसे इंपॉर्टेंट बताते हैं। और अगर आपको वहां से भी नहीं समझ में आता है तो आप प्रीवियस ईयर के बच्चों क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए। क्वेश्चन पेपर अगर आप एनालाइज करते हो तो आपको समझ में आते हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से पोर्शन से होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, किसके नोट्स बनाने चाहिए, किस टाइप के टॉपिक होते हैं बच्चों। उस अकॉर्डिंग से आप क्या करो, न्यूज़पेपर में वो टॉपिक देख लो, पढ़ लो, उसके बाद हेडिंग आप अपने अकॉर्डिंग डालो, अपने वर्ड्स में डालो, ताकि आप कभी रिवीजन करो तो आपको इजीली याद है। उसके बाद पॉइंटर वाइज नोट्स बनाओ कि फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट। टोटल 10 पॉइंट तो निकलेंगे ही निकलेंगे। 5 पॉइंट तो नॉर्मल करंट अफेयर से होंगे और 5 पॉइंट उसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप निकाल पाओगे। मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इन्हें एक बार करने की आदत डाली तो स्टैटिक बहुत रिजेंबल करेगा। तो करंट अफेयर्स ही नोट डाउन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मेहनत है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो आप ये काम कर सकते हो, राइट? So Shahid, Imandar and Fun and Games is saying C. So what is the answer of Satyam? So the correct answer is बच्चों it's A. It means बच्चों ध्यान से देखना। With reference to Indian Parliament, which one of the following is not correct? Appropriation bill must be passed by both the House of Parliament before it can be enacted into law. गलत है। Appropriation bill is a money bill. In case of money bill, Rajya Sabha has only recommendatory power and need not to pass by Rajya Sabha. ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ध्यान से देखना. दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू superintendent's direction and conduct of free and fair election, preparation of electoral rolls for all elections to the parliament, the state legislature, and the office of the president and the vice president. So, giving recognition into political parties and allotting election symbol to political party and individual contesting the elections. So, proclamation of final verdict in case of election disputes. So, which one is the correct functions? Which of the following are the functions of the Election Commission of India? ECI के main functions इनमें से कौन-कौन से हैं? Which one is the correct answer? Fun and games, Shahid, Kumkum, BWW. Which one? बच्चों रेफरल कोड यूज करना भूलना मत. पीए लाइव मेरा रेफरल कोड है. जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो 1 ईयर 3 मंथ, अभी क्रैश कोर्स भी चल रही है बच्चों, आप ले सकते हो 3 मंथ का. मैं 3 मंथ का इसलिए लेने बोल रही हूँ कि अभी तो आपका 1.5 मंथ क्लैट जाएगा और उसके बाद बाकी के जो भी पेपर होते हैं क्लैट और एलएट जाएगा. उसके बाद आप एमएससीटी दोगे, राइट? एमएससीटी दोगे, उसके बाद फिर आप एलसैट दोगे, फिर आप स्लैट दोगे, राइट? तो इनके लिए भी प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास टाइम होने चाहिए ना, तो आप एटलीस्ट 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. ठीक है, बस पी ए लाइव यूज करना. इट्स पी और ए, दैट इज पूजा अमन, एंड LIVE लाइव, राइट? चलिए, सो समवन इज सेइंग ए एंड समवन इज सेइंग बी. सो बच्चों द मेन फंक्शन इज इट्स ए. इट मीन्स 1 2 3 जो है वो उनके फंक्शंस हैं ECI के. प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ये उनके फंक्शंस में से नहीं आते. ठीक है बच्चों. High Court, not the Election Commission, is the final authority to give a final verdict in case of election disputes. In the alternative special election, benches may be constituted in High Court and earmarked exclusively for the disposal of election petitions and disputes. Right. So this is the next question. आप ये देखो, important question है. जो resolution होती है removal of vice president of India can be moved in the resolution of for moving the vice president of India can be moved in the BWW, Satyam, Abhinav, Fun and Games, Kumkum, Sakshi, Shahid. Which one is the correct answer, बच्चों? D. Okay. A or D? चलिए check करते हैं. So the correct answer is B. No A, no D. Very good, Kumkum. Article 67B. In the Constitution of India state, a vice president may be removed from his office by a resolution of the Council of State passed by the majority of all the then member of the council and agreed to by the House of the People. But no resolution for the purpose of this clause should be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution. Right. So this one is the next question. We have to find the highest decoding body for planning in India is the Planning Commission of India, or the Secretary of the Planning Commission of India is also the Secretary of the NDC, or the Constitution include economic and social planning in the concurrent list is the 7th schedule of the Constitution of India. So कौन से पॉइंट सही है बताओ. फन एंड गेम्स, BWW, सत्यम, साक्षी. बच्चों मेरी ना एक यूट्यूब सेशन भी होती है 6:15 PM पे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो. उसमें मैं 2 चीज की क्लासेस होती है. वो करंट अफेयर्स की बैकलॉग क्लियर हो रही है और कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कभी कभार डेटा इंटरप्रिटेशन की. ठीक है. कुमकुम आपको क्लियर हुआ कि न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाने हैं? ओके, सारे आंसर आ रहे हैं. बी डी सी बी पता नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज बी बच्चों. वेरी गुड. द बी इट मींस 2 and 3 करेक्ट है. फर्स्ट पॉइंट गलत है. So highest decision making body for planning in India is the Parliament. NDC is at the second position and Planning Commission at the third position. So economic and social planning is placed under entry to 20 in the concurrent list. Okay. So this one is the next question. ध्यान से question पढ़ना.
बच्चों ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। आर्टिकल 360 के बारे में, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। A proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months, unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both House of Parliament, right? So अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही होती है, ठीक है, और अगर एक्सपायर हो जाता है, सपोज दैट अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months, unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both House of Parliament, or if any proclamation of financial emergency is in the operation, it is competent for the President of India to issue direction for the reduction of salaries and allowances of all or any class of person serving in connection with the affair of the Union, but excluding the judge of the Supreme Court and the High Court. Which one is the correct answer? Come on. बच्चों, कौन सा आंसर करेक्ट होगा मुझे बताओ। देखो मैंने ऑलरेडी ना आपको इमरजेंसी पढ़ा रखी है, मैंने आपको ना इमरजेंसी पढ़ा रखी है, ठीक है। तो आई होप कि आपसे ये सॉरी इमरजेंसी आपसे ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। सी ओके तुमको सी ओके फन एंड गेम्स ओके। सो करेक्ट आंसर ए है बच्चों। इट मीन्स सिर्फ फर्स्ट पॉइंट जो है वो सही है, सेकंड गलत है। मैं आपको बताती हूँ। अंडर 360 any proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months, unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution passed by both House of Parliament. If approved by both House, then it operates for 6 months, right? So during the proclamation of financial emergency, President of India can issue direction for the reduction of salary and allowances of all or any class of person serving in connection with the affair of the Union, including the judge of the Supreme Court and high courts, right? तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सेप्शनल कर सकते, ठीक है। चलिए, सो अगला सवाल आपके सामने। So Advocate General of a state in India is appointed by the President of India upon the recommendation of the Governor of the concerned states, or as provided in the Civil Procedure Code. High Court have original appellate and advisory jurisdiction at the state level. Which one is the correct answer? So बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, बस एक क्वेश्चन और आपको करना है। 28 क्वेश्चन का आज टारगेट था, नेक्स्ट डे फिर से इस क्वेश्चंस को करेंगे। सो आप मुझे बताओ इसके आंसर्स क्या हैं। साक्षी, फन, कुमकुम, शेष, सी ओके। सो द करेक्ट आंसर इज बच्चों बी। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट and the original civil jurisdiction of the High Court has not altogether been abolished but retained in respect of action of a higher value. So original criminal jurisdiction of High Court has however been completely taken away by the Criminal Procedure Code 1973. Okay, so this is the last question. Authorization जो होता है, withdrawal of fund from the consolidated fund of India must come from the President of India. किसका authorization important है? President of India, Parliament of India, Prime Minister of India और Union Finance Minister? Which one बच्चों? Which one? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कुमकुम। अब टाइम ऐसा है कि अब आपको सिर्फ सिचुएशनल बेस्ड जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं लीगल में, अब आप क्वेश्चंस अब आप क्या करो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपका बचा रह गया है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कवर करो, क्वेश्चन से भी कवर कर सकते हो। और आपको पता होना चाहिए अब आप क्या करो, अब क्वेश्चंस ट्राई करो, क्योंकि अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी का जो पैटर्न है क्लैट का आप देख सकते हो लीगल में भी, सो वो सिचुएशनल बेस्ड आते हैं। तो अब आपको कहीं ना कहीं थियोरेटिकल अगर आपका कंप्लीट हो गया तो थोड़ी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरत है आपके लिए, ठीक है। ओके, सो बच्चों करेक्ट आंसर ए बी ओके। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ध्यान से देखना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया is the correct one. Parliament shall have power to authorize by law the withdrawal of monies from the consolidated fund of India for the purpose which the said grantor may. क्लियर है सभी को? क्या सभी को क्लियर है?
सो बच्चों थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो 6:15 पे है। इसके पहले 5 PM पे मेरी बच्चों क्लास है, प्लस क्लास है मैथ्स की, और एक और क्लास मेरी है 8:30 पे करंट अफेयर्स की रात में। तो ये दोनों जो है, ये दोनों आपके अनअकैडमी के ऐप पे है और ये यूट्यूब पे है बच्चों। सो ज्वाइन करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भूलना मत किसी को सब्सक्रिप्शन लेना होगा, PA लाइव यूज करना, ठीक है? इट्स PA लाइव। थैंक यू सो मच।